Hello student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter 18, that is the pollution of air and water. We know that we can survive for some time without food, but we cannot survive even for a few minutes without air. This simple fact tells us how air is very important for us. We already know that air consists of a mixture of gases by volume. About 78% of this mixture is nitrogen and about 21% is oxygen. Carbon dioxide, argon, methane, ozone, and water vapor are also present in very small quantities. What is pollution? The presence of unusually high concentration of harmful or poisonous substance in the environment is called pollution. Pollution contaminates the air and water with poisonous substance and make them impure to such an extent that they become harmful to the human beings, other animal, plants, as well as to the non-living things. Pollutions are of three types: water pollution, air pollution, and another type of pollution, an unwanted and harmful substance that contaminates the environment such as air and water is called pollutants. आपको मालूम है जो एयर और वाटर है जो कंटेन करते हैं पॉल्यूनेंट आर टेबल्स हार्मफुल टू ह्यूमंस अदर एनिमल प्लांट्स एंड आर सेड टू बी polluted. Air and water are both essential for our survival. For example, air is necessary for breathing. We cannot live without air even for a few minutes. We study about air pollution. The air over large cities is contaminated with harmful gases like sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, smoke and dust, etc. The contamination of air with harmful gases, smoke and dust, etc. are called as air pollution. The substance whose presence in the air makes it impure or contaminant is called an air pollutant. The major pollutant which causes air pollution are sulfur dioxide, nitrogen oxide, carbon monoxide, excess of carbon dioxide, chlorofluorocarbon, and suspended particles. Causes of air pollution. आपको मालूम है जो क्लाउड होते हैं स्मोक फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ अ व्हीकल, वो कैसे होते हैं? बाय इंक्रीजिंग ट्रैफिक. जो स्मोक होता है फ्रॉम अ फैक्ट्री चिमनी, ये किससे होते हैं? ग्रोइंग सिटी से. इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो, ये किससे होते हैं? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से. सिगरेट स्मोक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्निंग लीव्स, apathetic peoples. Air get polluted. The substances which contaminate the air are called air pollutants. Sometimes such substance may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruption. Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. The sources of air pollution are factories, power plants, automobile exhaust, and burning of firewood and dung case. Vehicles produce high levels of pollutants like carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxide, and smoke. Carbon monoxide is produced from incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. पता है आपको ये पॉइजनस गैस होती है और ये रिड्यूस कर देती है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. अगर हम व्हीकल को रजिस्टर्ड कराएं इन दिल्ली तो आई लाइन अप आफ्टर वन after the other, the total length would be nearly equal to the combined length of the two longest rivers in the world, Nile and Amazon. Many industries are also responsible for causing air pollution. आपको मालूम है जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं वो मेजर सोर्स होती हैं गैसियस पॉल्यूएंट्स की, लाइक जैसे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है आप सबको मालूम है किससे प्रोड्यूस होता है? बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट्स. और ये क्या कॉज करता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज एक्सेट्रा. नेक्स्ट जो मेन सोर्स होता है वो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है. जैसे हम कहीं रिफर्स करते हैं जैसे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एयर की इंडोर एनवायरनमेंट विद इन अ होम, बिल्डिंग और एन इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल फैसिलिटीज़. जो इंडोर एयर पॉल्यूशन होता है वो कंसर्न करता है इन द डेवलप्ड कंट्रीज़ where energy efficiency improvements sometimes make house relatively airtight. उससे क्या होता है? रिड्यूसिंग हो रहे हैं वेंटिलेशन का और रेजिंग कर रहे हैं पॉल्यूएंट लेवल्स.
जो इंडोर एयर प्रॉब्लम्स हैं कैन बी सबटेल एंड डू नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस ईजिली रिकॉग्नाइज इम्पैक्ट ऑन आवर हेल्थ. Different conditions are responsible for indoor air pollution in the rural area and the urban areas. रूरल एरियाज में एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? आप तो मालूम है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अभी भी रूरल एरियाज हैं जो फेस करती हैं ग्रेटेस्ट थ्रेट फ्रॉम इंडोर पॉल्यूशन, वेयर एज सम 3.5 बिलियन कंटिन्यू टू रिलाई ऑन ट्रेडिशनल फ्यूल्स. वो आज भी ट्रेडिशनल फ्यूल्स चलाते हैं जैसे फायरवुड है, चारकोल है, काउ डंग है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग. जो कंसनट्रेशन है इंडोर पॉल्यूएंट्स का हाउस होल्ड में जो बर्न करता है ट्रेडिशनल फ्यूल्स आर अलार्मिंग. बर्निंग सच फ्यूल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक एंड द एयर पॉल्यूएंट्स इन द कन्फाइंड स्पेस ऑफ द होम रिजल्टिंग इन हाई एक्सपोजर. जो वुमेंस हैं एंड चिल्ड्रंस हैं उनके जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा इसको सफ़र करते हैं बिकॉज दे ऑलवेज रिमेन इन द हाउसेस. जो 1992 था जो वर्ल्ड बैंक ने डिज़ाइन किया इंडोर पॉल्यूशन इन द डेवलपिंग कंट्री एज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. दो डेली एवरेजेस है पॉल्यूएंट लेवल का जो एमिटेड होती है इंडोर से ओवन एक्सीड करेंट WHO गाइडलाइंस एंड एक्सेप्टेबल लेवल्स. Although many hundreds of separate chemical agents have been identified in the smoke from biofuels, the four जो मोस्ट सीरियस पॉल्यूएंट्स हैं वो क्या हैं? पर्टिकुलेट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर है, फॉर्मल्डिहाइड है. अगर देखा जाए तो लिटिल मॉनिटरिंग से ये पता चला है कि रूरल एंड पुअर जो अर्बन इंडोर एनवायरनमेंट है इज़ द स्टैटिस्टिकली इग्नोरस. Volatile organic compounds. Volatile organic compounds originate mainly from solvents and chemicals. जो मेन इंडोर सोर्सेज होते हैं वो होते हैं परफ्यूम्स, हेयर स्पेस, फर्नीचर्स, पॉलिश ग्लूज, एयर फ्रेशनर्स, मॉथ रेपेलेंट्स, वुड प्रिजर्वेटिव एंड मैनी अदर प्रोडक्ट यूज इन द हाउस. जो मेन हेल्थ इफेक्ट होता है इज़ द इरिटेशन ऑफ द आई, nose and throat. In more severe case, there may be headaches, nausea, and loss of coordination. In the long term, some of the pollutants are suspected to damage to the liver and other parts of the body. What is the effect of tobacco smoke? आपको पता है जो tobacco smoke होता है वो generate करता है wide range of harmful chemicals and it is known to cause cancer. It is well known that passive smoking causes a wide range of problems to the passive smoker. The person who is in the same room with a smoker and is not herself a smoker, ranging from burning eyes, nose and throat irritation to cancer, bronchitis, severe asthma and decrease in lung function. Next main cause effects हैं जो पड़ते हैं हमारी हेल्थ पर. वो क्या करते हैं, कौन करते हैं? पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स वो हैं अगर इन्हें हम केयरफुली यूज़ करें इन द मैन्युफैक्चर्स और उसमें तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इट डू नॉट कॉज टू मच हार्म टू द इंडोर एयर. नेक्स्ट होते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूएंट्स. आपको पता है ये इंक्लूड करते हैं पॉलन फ्रॉम प्लांट्स, माइट, हेयर फ्रॉम पेट्स, फंगी, पैरासाइट एंड सम बैक्टीरिया. तो जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं? एलर्जेंस होते हैं और कॉज करते हैं अस्थमा, हे फीवर एंड अदर एलर्जिक डिजीजेस. नेक्स्ट होती है फॉर्मल्डिहाइड. आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड वो गैस होती है जो कहाँ से आती है? कारपेट से, पार्टिकल बोर्ड से एंड इंसुलिन फॉर्म से. और ये क्या कॉज करती है? इरिटेशन टू द आइज एंड नोज एंड मे कॉज एलर्जीज इन सम पीपल. नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन. जो अनदर इफेक्ट होता है एयर पॉल्यूशन का वो होता है एसिड रेन. जो फिनोमेना अकर होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोल, डीजल एंड कोल कंबाइन विद वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉल एज अ रेन, स्नो और फॉग. ये गैसेस जो होते हैं नॉट एमिटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वॉल्केनोज. एसिड रेन कॉजेज एक्सेसिव डैमेज टू वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल रिसोर्सेज एंड इवन ह्यूमन हेल्थ. Many lakes and streams have been constructed and this has led to the disappearance of some species of fish in Europe. USA and Canada are also extensive damage to forest and other forms of life. It is said that it can corrode buildings and be hazardous to human health.
क्या होता है कि जब कंटेनमेंट्स कैरिड हो जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से, तो जो सोर्स ऑफ एसिड रेन होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है टू पिन पॉइंट एंड हैंस डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल. फॉर एग्जांपल, जो एसिड रेन है दैट मे हैव डैमेज सम फॉरेस्ट इन कैनेडा could have organized in the industrial areas of USA. In fact, this has created dangerous disagreements between Canada and the United States and among European countries over the cause of and solution to the problem of acid rain. The international जो scope है जो इस problem का has to let the sinking of internal agreements on the limitation of sulfur and nitrogen oxide emanation. Chlorofluorocarbons are the other kinds of pollutants which are used in refrigerator, air condition and aerosol sprays. CFAS damage the ozone layer of the atmosphere, that is ozone layer protect us from ultraviolet rays of the sun. Automobiles burns diesels and petrol also produce tiny particles which remain suspended in air for long periods. They reduce visibility when inhaled. They cause diseases. Such particles are also produced during industrial processes like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles which also pollute the atmosphere. The Taj Mahal is also affected from pollution. Taj Mahal, located in Agra, has become a matter of concern. Experts have warned that pollutants in air are discoloring is white marble. So it is not living organisms that get effectively polluted air, but non-living things like building, mountains and statues also get affected. Greenhouse effect. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by sun rays and part is reflection back into space. जो पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है एटमॉस्फेयर से, और ट्रैप्ड रेडिएशन क्या हो जाते हैं वो फर्दर वार्म कर देते हैं अर्थ को. तो जो ट्रैप्ड हीट वार्म करती है दैट इज़ द ग्रीन हाउस. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द ग्रीन एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. Without this process, life would not be possible on the earth, but now it threatens life. Carbon dioxide, one of the gases responsible for this effect. ग्लोबल वार्मिंग. आपको मालूम है ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ सीरियस थ्रेट. ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है, क्या कॉज करती है कि ये सी लेवल्स को हाइज कर देती है, राइज कर देती है ड्रामेटिकली. इट मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड. ग्लोबल वार्मिंग could result in wide reaching effect gases at the present level. अदरवाइज़ क्या होता है जो टेम्परेचर होता है मे बी राइज फ्रॉम मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाय ऑन रेनफॉल पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल. जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं लिविंग इन रीजन विच आर थ्रेटन्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया. रिसेंट क्लाइमेट चेंज करती है रिपोर्ट गिव अस कि ओनली अ लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस द एंड of the century are labeled considered dangerous. What can be done to reduce air pollution? There are many success stories in our fight against air pollution. जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, बहुत साल पहले क्या हुआ था, दिल्ली वॉज द वन मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. इट वॉज बीन checked by fumes released from automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch to fuels like CNG and unleaded petrol. These measures have resulted in cleaner area for the city. There is no need to switch over all the alternative fuel instead of the fossil fuels for our energy requirements. These could be solar energy, hydropower and wind energy. What steps should be taken to controlling air pollution? First, the air pollution can be controlled by using smokeless fuels like LPG, CNG, etc. Solar water heaters should be installed to obtain hot water. The air pollution from motor vehicles can be reduced by using CNG. The air pollution from factories, industry, thermal power stations, oil refineries, etc. can be controlled by washing their smoke and waste gases with jets of water. The air pollution can be controlled by using non-polluting sources of energy like solar energy, wind energy and hydro energy for generating electricity. Our role in controlling air pollution. We should not burn dry leaves, papers and garbage in the open. We should save electricity. We should grow more trees. We should utilize the plastic waste material in making useful material. We should use bicycle for covering short distances. We should
Use 4Rs. 4Rs means reuse, reduce, recycle and recover. वाटर पॉल्यूशन. वाटर्स बिकम डर्टी. हम क्या करते हैं जब हम उसे यूज़ कर लेते हैं फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा. इसका मतलब ये हो जाता है द वी adding some materials to the water which spoil its quality and changes its smell and color. Whenever harmful substances such as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water become polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. Does water get polluted? आपको मालूम है गंगा है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर है इंडिया का. इट सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन. जो बहुत सारे पीपल्स हैं, मिलियन ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट आवर डेली नीड्स एंड लिवलीहुड. हाउएवर क्या होता है, रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर फाउंड दैट गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड. The pollution level have been also rising for many years. We have reached this stage because the towns and city through which the river flows throw large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the pollution level are so high that aquatic life cannot survive. This Ganga story tells us how does the water get polluted? Many industries discharge harmful chemicals into rivers and streams. जो क्या कॉज करते हैं पॉल्यूशन ऑफ वाटर. जैसे एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरीज हैं, पेपर फैक्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल एंड शुगर मिल्स एंड अदर केमिकल फैक्ट्रीज. ये इंडस्ट्रीज कॉज करती हैं केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. द केमिकल रिलीज होते हैं इंक्लूड arsenic, lead and fluoride which led to toxicity in plants and animals. There are regulations to prevent this. Industries are supposed to treat the waste product before discharging into water, but quite often the rules are not followed. The soil is also affected by impure water, causing changes in acidity, growth of worms, etc. समटाइम्स तो ये होता है कि जो अनट्रीटेड सीवेज होता है वो भी थ्रोन कर देते हैं डायरेक्टली इनटू रिवर. इट कंटेन्स food waste, detergent, microorganism, etc. Water contaminated with sewage may contain bacteria, viruses, fungi, and parasites which cause diseases like cholera, typhoid, and jaundice. आपको पता है कि hot water भी क्या है? Pollutant है. This is usually water from power plant and industries released into river. It raises the temperature of the water body जो इफ़ेक्ट करते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स जो उसके अंदर रह रहे होते हैं. इस तरह से हॉट वाटर भी वाटर को पॉल्यूटेड कर. पोर्टेबल वाटर. आप मालूम है वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. यू हैव सीन how various physical and chemical process in the sewage treatment plants have to clean water before discharging into water bodies. Similarly, municipal bodies treat the water before supplying it to household. आपको मालूम है 25% वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर. हाउ इज़ वाटर प्योरीफाइड. आपको मालूम है यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज़ फिल्टर्ड. दिस इज़ अ फिजिकल मैथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज़. A popular household filter is a candle type filter. Many households use boiling as a method for obtaining safe drinking water. Boiling kills the germs present in the water. Chlorination is a commonly used chemical method for purified water. It is done by adding chlorine tablets or bleaching powder to the water. We should not use more chlorine tablets than specified. We can think of creative ideas like reusing water used for washing and for other household tasks. For example, water used for washing vegetables may be used to water plants in the garden. Pollution is no longer a distant phenomenon, it is affecting the quality of our daily lives. Unless we all realize our responsibility and start using environment-friendly process, the very survival of our planet is in danger. आपको पता है जब हम टीथ ब्रश करते हैं तो leaving the tap running may waste several liters of water. A tap that drips once every second wastes a few thousand liters of water every year. Think about it. Slogans for pollution. Be part of the solution, not of air pollution. Earth loves you, love it back. Join the revolution and stop the pollution. Enjoy nature, recycle. I have a dream and it is green. Give our children a green future. Nature is life. No nature, no life. Forever green, fresh air and clean water deserve it. We created pollution, we have a depth. Keep earth green, not grey.
Thank you. I hope you will understand the chapter. If there is any problem, ask me in class.